Variations in demand. Let's see at the variations in demand. जब किसी प्रोडक्ट की मांग बढ़ती और गिरती है ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तब उसे वेरिएशंस इन डिमांड कहा जाता है. वेरिएशन इन डिमांड आर ऑफ टू टाइप्स एंड दे आर एज फॉलोज. फर्स्ट, expansion of demand, and second, contraction of demand. Let's understand the variation in demand in detail. First, expansion of demand. Expansion of demand refers to rise in quantity demanded only and only due to fall in price alone, while other factors like taste, income of the consumer, size of population, etc. remains unchanged. Let's look at the illustration with the help of a schedule and diagram. On x-axis, we take quantity demand in kg, and on y-axis, we take price of onion in rupees. Following table and figure shows that when price of onion is 30 rupees, 10 kgs of onion are demanded, and when the price of onion is 10 rupees, then 20 kgs of onion are demanded. That means it is falls down. Here, DD is called as demand curve. हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, यानी कि जब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है तो कंज्यूमर मूव करता है सेम डिमांड कर्व पर. जैसे कि हमने देखा कि ओनियन की जो प्राइस है वो डिक्रीज होकर 30 रुपीज से 10 रुपीज हो गई है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो बढ़कर 10 kg से 20 kg हो गई है. सो ग्राफ इज मूविंग फ्रॉम A to B, so it is downward movement and it is called as extension or expansion of demand. Second, contraction of demand. Contraction of demand refers to fall in demand only and only due to rise in price alone. Other factors like taste, income of the consumer, size of population, etc. remains unchanged. Let's look at the illustration with the help of schedule and diagram. On x-axis, we take quantity demanded in kg, and on y-axis, we take price of onion in rupees. Following table and figure shows that when price of onion is 10 rupees, 30 kgs of onions are demanded, and when the price of onion is 20 rupees, then 10 kgs of onions are demanded. That means the price of the onion is increased. Here, DD is called as demand curve. हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है तो कंज्यूमर मूव करता है सेम डिमांड कर्व पर. जैसे कि हमने ये देखा कि ओनियन की जो इनिशियल प्राइस है वो इंक्रीज होकर 10 रुपीज से 20 रुपीज हो गई है, तो कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कम होकर 30 kg से 10 kg हो गई है. सो ग्राफ इज मूविंग फ्रॉम B to A, so it is upward movement and it is called as contraction of demand.